Today is 2nd October 2025 and the day is Thursday. As you know that we should start our day with the beautiful name of Almighty Allah. So for the recitation of the Holy Quran, the man is here. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله العظيم. Now our Ban is here for the translation. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कसम है उन घोड़ों की जो पुकारे मारते हुए दौड़ते हैं, फिर चिंगारियां झाड़ते हैं, फिर सुबह सवेरे छापा मारते हैं, फिर उस मौके पर गर्द गुबार उड़ाते हैं, फिर इसी हालत में किसी मस्जिद के अंदर जा घुसते हैं। हकीकत ये है कि इंसान अपने रब का बड़ा नाशुक्र है और वो खुद इस पर गवाह है, और वो माल और दौलत की मोहब्बत में बुरी तरह मुब्तला है। तो क्या वो उस वक्त को नहीं जानता जब कब्रों में जो कुछ है उसे निकाल लिया जाएगा और सीनों में जो कुछ मख्फी है उसे बरामद करके इसकी जांच पड़ताल की जाए। यकीनन उनका रब उस रोज उनसे खूब बाखबर होगा। I'd like to call Aisha Rashid for hadith. औज़ु बिल्लाहि शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-यदुल उल्या खैरुम मिनल्लाहि सुफ़ला। The upper hand is better than the lower hand. Now for the dua, 𝐼𝐶 is here. रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। I would like to call Hussein the word of the day. Today the word of the day is empathize. Empathize means understand and share the feeling of others. Thank you. Is here for the thought of Good morning everyone. Today the thought of the day is your attitude creates your success. Stay positive and focus to move ahead. It means if you have a positive attitude even when you are facing challenges, you are more likely to find solution and achieve your goal. Thank you. this speech, I would like to call Hamza. Respected heads, teachers and my dear fellows, Assalamu alaikum. Today the topic I like to talk about is rather small but has great impact on our lives. That is kindness. We often think it has to be a grand gesture, but the greatest power of kindness is in its simplicity. Kindness is the gentle word to someone struggling, the simple act of holding a door, or even just a genuine smile on a difficult day. When we choose kindness, we are not just making someone else's day a little brighter, we are changing our own perspective. Science has shown that being kind actually makes us happier, reduces stress. So my challenge to you today is simple. Don't wait for a special occasion. Choose to be kind, not just to others but for yourself. Be the ripple, be the light. Thank you. I hope you like our presentation. Thanks. Assalamu alaikum everyone. A very good morning to all of you and a big round of applause for Miss Sabahat and all the students. You all were great. Well done. सल्तनत पारिजादा बिंदाबाद शाद बाद मंगले मुराद पंचमे सितारा हो हिलाल
रहे बड़े तरस्सियो कमाल कल जमाने माजी शाने हाल जाने इस्तक़बाल सारे खुदाए ज़ुल जलाल